Audio Jungle. Hello friends, today we are going to start with indirect tax GST, that is goods and service tax. Very few time is left for exams. Hope so you all are studying well. रिविजन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू आई एम अज्यूमिंग दैट आपने ऑलरेडी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है. बेसिक एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज क्विक रिविजन जो आप ब्रेक टाइम में सुने एंड टॉपिक को रिकलेक्ट करें. For this we are keeping ICI module only as a base. So without wasting time, let's start for the day. Nature of registration. Registration in GST is pen-based and state-specific. There is no centralization. However, किसी person के multiple place of business है, एक ही state या union territory में, in that case separate registration may be granted subject to conditions. GST identification number, that is GSTIN 15-digit number and certificate of registration incorporating therein this GSTIN is made available to applicant on GST common portal. अगर कोई अपने बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन कराता है then it is advantageous. That person will be legally recognized as supplier. There will be proper accounting of taxes paid. Also, it will be legally authorized to collect tax and pass on the credit. रजिस्ट्रेशन टॉपिक सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर्ड है. सेक्शन 22 डिस्कस अबाउट पर्सन्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन. फर्स्टली, जो कोई अर्लियर लॉ में रजिस्टर्ड थी शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST. देन दोज हु एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट. उसको 3 कैटेगरीज में इजीली याद कर सकते हैं. फर्स्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 lakh फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. अमेंडमेंट के बाद सिर्फ ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ही इस लिमिट में आते हैं. दे आर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. सेकेंड, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 lakh फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. दे आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना. थर्ड, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 lakh फॉर सर्विसेज, 20 lakh for services and ₹40 lakh for goods exclusively. जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं लिमिट है 40 lakhs. इसमें बाकी के स्टेट्स हैं जो है जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं. फर्स्ट, इफ़ अगर किसी की प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में है और कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या स्टेट्स विथ ₹20 lakh लिमिट है, देन ओवरऑल लिमिट फॉर GST रजिस्ट्रेशन बी रिड्यूस टू ₹10 lakh और ₹20 lakh रिस्पेक्टिवली. सेकेंड, इफ पर्सन इज एंगेज्ड इन exempt सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. Exempt any person who is engaged in supply of goods exclusively and threshold limit for supply of goods does not exceed ₹40 lakh from registration requirement. मतलब exempt supply of service होगी तो लिमिट 40 lakh ही रहेगी, ना कि reduce to ₹20 lakh. Aggregate turnover for threshold limit will be computed on all India basis for same PAN. Aggregate turnover equals to taxable supplies plus exempt supplies plus exports plus interstate supplies. Further, in case of transfer of business on account of succession etc., transferee liable to be registered from the date of succession of business. And in case of amalgamation, demerger by an order of High Court etc., transferee liable to be registered from the date on which Registrar of Companies issues incorporation certificate. Section 23 जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है वो बताता है. इसीलिए हम पहले जिनको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना है जो सेक्शन 24 में दिया है वो देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस. फर्स्ट, persons making any interstate taxable supply. Second, casual taxable persons CTP making taxable supply.
However, first two cases में threshold limit of 20 lakh and 10 lakh for special category states of Mizoram, Manipur, Nagaland and Tripura is available अगर कोई interstate taxable supply या interstates taxable supplies of notified handicraft goods करता है. Third, persons who are required to pay tax under reverse charge. However, जो exclusively ऐसी supplies कर रहे हैं जिस पर reverse charge लगेगा, then they are exempt from registration. Fourth, non-resident taxable persons (NRTP) making taxable supply. Fifth, those e-commerce operators who are notified as liable for tax payment under Section 9(5). Sixth, suppliers other than notified under Section 9(5) who supply through an e-commerce operator. Seventh, every e-commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52. Eighth, persons who are required to deduct tax under Section 51, whether or not separately registered under this Act. Ninth, persons who make taxable supply of goods and services or both on behalf of other taxable persons, whether as an agent or otherwise. 10th, input service distributor, whether or not separately registered under this Act. 11th, every person supplying online information and database access or retrieval (OIDAR) services from a place outside India to a person in India other than a registered person. And 12th, such other persons or class of persons as may be notified by government on the recommendations of the council. Now let's start with section 23, which says about persons not liable for registration. First, person engaged exclusively in the business of supplying goods and or services not liable to tax are wholly exempt from tax. Second, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Further, if an agriculturist is also engaged in making any supply other than supply of produce out of cultivation of land, he shall be liable to registration based on applicable threshold limit. Third, persons making only reverse charge supplies. Fourth, persons making interstate supplies of taxable services up to Rs 20 lakh. Fifth, persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to Rs 20 lakh. Sixth, casual taxable persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to Rs 20 lakh. Seventh, persons making supplies of services through an ECO other than supplies specified under Section 9(5) of CGST Act with aggregate turnover up to Rs 20 lakh. जहाँ भी Rs 20 lakh की लिमिट है वहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के लिए लिमिट विल बी Rs 10 lakh. रिमेनिंग सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, so that we also feel motivated to make more such videos. Thank you.